Julie Thukun tene dring ata yang topic ponok nutrition in fungi. Song pasang ata fungi nang kenang kazuk shigang ata nutrition chanok hala yang ata fungi ngunis kenang kazuk shigang ata food materials kun absorb chonok kazuk shigang ata kenang te on digest chonok so otes kor bata kenang silchezanok जब मता fungi से nutrition ngata aspira ta champo spera chingata kenang ma important in that fungi are universally ngata achlorophyll no agwale yang ngata chinok fungi nang kenata plastids yanata containing chlorophylls pigments is absent. That means ngata chinok ki fungi ngata kenang koronai ngata food material gun synthesize chongyana mano kazuk shingata plants kunis khoranga food material synthesize chonokpa plants kun autotrophic inok chezena plants kuninang chlorophyll pigment otyak hagole chloroplast nankuga chlorophyll pigment otyak and because of which plants are autotrophic in nature they can prepare their own food. But on the other hand fungi they are achlorophyllous hagole so fungi na kenata chlorophyll pigment matches वजह से fungi they have to depend on other living organisms or dead bodies of the living organism for their nutrition. हाँ बोले so हर fungi universal characteristic feature you know that fungi lacks the plastids or chloroplast so thus they are completely heterotrophic. Heterotrophic means the one which depends on ready-made food for their nutrition. So fungi kenata living organism या dead bodies या decaying organic matters ते समय कहता है ना fungi feature होला. Fungi को नाता chemo organic troph जानो chemo organic troph chief है जानो because they obtain their energy by oxidation of the organic substance po ka no organic substance po ata ke na dead organic matters no ya ta living organism na krenga ta organic matters no hagole so ote on ta oxidize chose breakdown chose te kana ko energy thoba no hagole so they also produce some extracellular enzyme means fungi singata kena philoga enzyme reproduce chono ka jeste complex ngata food materials ngata simple form in convert chono te simple form bo tene fungi se absorb chono hagwale so on the basis of nutrition fungi ngata kena categorize chusot kya sumina parasites hagwale parasites na ko ngata biotrophs na necrotrophs nizno then saprotrophs then mutualistic symbionts agul so sumka ngata kena one by one ngata touches no chino parasites ngata fungi which obtain their food materials from the living organism are known as parasite agul kaltes ngata fungi jik young living organism jika chai to animals indo yang ata plants indo yang ata any other microorganism jindo hala ote living organism bika feed chedna then to langata parasite zano hagole to langata chi zano parasite zano so we have ectoparasite which feeds on or which lives on the surface of the other living organism or the host and we have endoparasite which fits inside the body of the other living organism hagole yata inside the cell so amasole so ectoparasite na endoparasite hotya and this ectoparasite and endoparasite parasitic fungi they produces a hostoria chino mycelium inota dang sngana ta siltono fungi se mycelium fungi se hyphae unala so mycelium jig hyphae jingata ke na plants guni yangata animals guni tissue se nankuga juxte chan hola like ngata roots ngata se nankuga plants roots ngata se nanku kyang se chamin wale onna chogla fungi se ngata ke na kwe
roots kun kenang sorry kwe mycelium hafio kenang thilata sela animal tissue na plant tissue sin nanku ga chanok otio langata kena host zanok sorry oto langata kena hostoria zanok and the hostoria they help the fungi in absorption hago mangole mangse pawda fungi se hostoria produce chanok and fungi khachi utke kawata kena directly ngata absorb chanok from the host cell so ale then parasitic fungi kena ta snangi jit kamala biotrophs na necrotrophs. So biotrophs collagen these are the fungi that obtain nutrients from the living host tissue only and often without killing them. So biotrophs kun ngata kenang living tissue kana living organism ji kana कोई food materials तो consume चुआनो वाला absorb चुआनो लेकिन without killing them without harming them आता young living organism चिक पोला चाहे कजुक शिगिन यो नंग host पो हाला त्यो लोग आता इचंग harm मचुआ या आता को kill मचुआ क्या ना कोई का fit चुआनो त्यो लोग आता biotrophs आनो biotrophs secrete chemicals that cause host cell membrane to become permeable to sugars amino acids and these nutrients leak out of the host cell and fungus absorb them. E biotrophs fungi uni chi chuano parasitic fungi uni cause chemical jiganta secret chuano te chemical bu kena ta host ngata cell hala cell walls un ngata kena ya cell membrane un kena permeable gir chuano te na ta kena nutrients un philo abings te on chuano ha gole nutrients in the form of sugars and amino acids te samata philo abiano चाहेगा था प्लांट टिश्यू इंडो एनिमल टिश्यू इंडो तेना फिलो अभी चोन होला तेरे तो फिलो अभी आचा पो फंजाई उनिस एब्जॉर्ब चोनो सो ओते होना था बायोट्रॉप्स सनो in biotrophic attack of plants fungal cell remain confined to the intercellular spaces and obtain their nourishment through hostoria हा बोले फंजाई के नंग सिर्फ कहता इंटरसेलुलर यानी कहता सेल मुनि जुंग मुनि नंग कहता को ग्रो चोनो हा बोले तेने कोई nutrients को क्या ना आता तक से hostoria या मतलब hostorium is थोड़ा आता क्या ना absorb चोनो सवाल है so ये hostorius को लगेंगे जा next page पे का text detail इन नजरें hostoria चिन्ह होला hostoria are outgrowth of somatic hyphae अब hyphae का पता ना fungal hyphae fungal सिंगता body से part चिन्ह होला hyphae like filamentous structure jigino so ote hafal growth jigino which penetrates the plant host cell through a minute pore and come in contact with the plant cell plasma membrane and which probably makes it easier to absorb nutrients by increasing the absorptive area for the parasitic fungus अब होस्टोरियन ये एक डायग्राम निस तांसो निसके का ता के जलता नाला फंगल हाइफिंग ता के ना दस प्लांट सेल इंडो या एनिमल सेल इंडो टिश्यू इंडो ते नंकुगा युक्त छर वाले इंटरसेलुलर स्पेसेस गुनी जुंग नंगाता के ना ग्रो चानो ग्रो सोंस्ते तेने बान जिगाता के ना ओते फंगल हाइफ्यू के ना ता सेल नंकुगा ग्रो चानो हा बोले ओते वन चीज आनो ओते सेल नंकुगा ग्रो सोंसे ता एब्जॉर्ब चानो न्यूट्रिएंट्स गुन तो लाता होस्टोरिया जानो सिंगुलर ngata hostoria meno हा बोले So hostoria may be variously shaped. It could be knob-like. Knob-like ngata का जो कहते हैं कोई hyphae क्या hyphae end भी कहता है क्या ना dog चिक सोचते क्या तो लगाता knob-like जैसे ना या simply elongated होती क्या या मैंने branch होती क्या कैसे कुछ कहता तक से roots कुन plant से roots कुन branching होंदो ओ जो लगाता क्या ना fungal hyphae fungal hostoria क्या ना आता branch वानो हाँ बोले so ई डायग्राम इसके गांगे जाता स्टांट की होस्टोरिया के नाता कजुक शिगा गाता सेल गुनी जुंगा ग्रो चरुक सेल नंकु गाता के ना ग्रो चरुक जकनबो सोंसले then there are some fungi which parasitize the mycelium of other fungi यानी गाता fungi चिकचिक young fungi चिकचिक गाता feed choches fungi चिकचिक young fungi चिकचिक गाता grow choches हा बोले parasite choches ओ जो सिक्के संयुक्त क्या तो लगाता चीज़ आनो बायोट्रॉफिक माइक्रोपैरासाइट्स आनो
hagole biotrophic mycoparasite kalazen te fungus kun kaun kenang young living fungus shi ka ta kenang grow chwanok ya te kan ta nutrients kun absorb chwanok but without harming the other one, hagole without killing the other one. So we have one example of such biotrophic mycoparasite, Peptocephalus virginina जरकन बोला zygomacytes से member जिनो था zygomacytes fungi से member जिनो Peptocephalus virginina जरकन बो ई fungus पो था young fungus हाँ बोले fungus like mucor जरकन था fungus का टॉपिका या कोई जुक्सपे का grow चुत क्या grow चो से nutrients को था absorb चुत क्या हाँ बोले. So this is one example of biotrophic mycoparasite. नेक्ट्रोट्रॉफ हाँ बोले या नेक्ट्रोट्रॉफिक फंजाई. अब नेक्ट्रोट्रॉफ ना बायोट्रॉफ से अच्छी फराक क्या नेक्ट्रोट्रॉफ दे अट्रैक्ट द लिविंग होस्ट so virulently that they kill the host cell early in the course of parasitism. Therefore, they feed essentially on the dead tissue. Inang ata kenang necrotrophic fungi kenang young living organism jiga grow chono हाँ बोले लेकिन क्वे kenang a living organism ngata cells kun yang ata living organism hosts gangpo ngata kenang death chachuano हाँ बोले ngata क्वे tissues kun ngata cells kun ngata death chachuano biotropsin ngata chीज biotropsin attack chuano parasitize chuano लेकिन without harming, without killing the host. Necrotropsin it also grows on the other living host cell but it kills the host. It kills the whole cells and therefore it feeds on the dead organic cells. So necrotrophic may also secrete some toxic that kills the host cell by damaging the plasma membrane, causing the nutrients to leak out rapidly and readily available for the fungus. ई केस पे नची चोनो नेक्रोट्रॉफिक फंजाई उनिस गता जैसे को गता लिविंग गता तक से प्लांट टिश्यू इंडो या एनिमल टिश्यू इंडो ते नंकु वचा ग्रो छा चांपो हाँ बोले इंटरसेलुलर स्पेसिस गुने ना सो से नंकु को होस्टोरिया सेल या होस्टोरिया हाइफी गता डेवलप चो चांपो दे रिलीजेस सम टॉक्सिक केमिकल्स हाँ बोले केमिकल्स गता रिलीज ऑन टॉक्सिक चिक काउ जैसे गता होस्ट सेली या होस्ट टिश्यू नी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ना ब्रेक छाचो हाँ बोले डिस्ट्रॉय छुआनो का जैसे चमचिक कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स जो कंटेंट जो ते समाता फिलोबिंग्स तो नो तेने ते न्यूट्रिएंट्स गुनाता किया ना फंजा से कंज्यूम छुआनो हाँ बोले सो लाइक बायोट्रोफिक माइकोपैरासाइट चोगलांगता नेक्रोट्रोफिक माइकोपैरासाइट संयोती हाला तेने उनका उन्हें नेक्रोट्रोपिक माइकोपैरासाइट ते फंजाई उन्हें काउनिस यंग फंजाई जी का गता ग्रो चोनो यंग फंजाई जी का गता के ना फीड चोनो बाय किलिंग द अदर फंजाई हाँ बोले ई केस पे ना गता माइकोपैरासाइट नेक्रोट्रोपिक माइकोपैरासाइट पे ना चिट क्या फंगस चिक यंग फंगस का फीड चोनो लेकिन सेकेंड फंगस पो काका को ग्रो चुत काका को फीड चुत ओत्यो गता के ना कोई डिस्ट्रॉय चोनो कोई किल चोनो हाँ बोले. We have one example of necrotrophic mycoparasite that is Trichoderma viride. Trichoderma viride जखन मौता किया ना फंगस न होता सोइल न मामा पोत किया ई फंगस मौता किया ना यंग फंगस दो वाले जैसे गता राजोक्टोनिया सोलनी जखन गता फंगस कुनिका फीड चोनो तेने राजोक्टोनिया सोलनी गता किया ना किल चोनो हाँ वो किल चो से कोई सामशुग न्यूट्रिएंट ना त्यो कोरांस कंज्यूम चोनो. So Trichoderma viride is one example of necrotropic mycoparasite. हाँ वो साले. Then another group of fungi based on the nutrition is saprotroph या saprotrophic fungi जानो. अब saprotrophs गता का होने नो those fungi which feeds on the dead organic matters हाँ बोले dead organic matters गता का होने जैसे गता के नंग लोमा रूल बाउने नो हाँ बोले तना चुला ता के नंग बालांस चा समानो dead organic matters यहाँ ता के नंग animal जिगता ते वो शेषीस ते उड़ना dead सोंस उड़ना त्यो गता dead organic matters नो हाँ बोले सुचाम शिगता ओ चोसी organic related ngata waste yo te changbe ka ngata fungus ma po ngata grow cho
hagole soil inangu ata humus kyak soil inangu ata minda organic matter jo kyak ote organic matters kuni ka ata fungus grow chono ठीक है मेरा ले त ई फंगस कुन ता कजु गंगा ता को न्यूट्रिएंट नेना नोक्जना ई डेड ऑर्गेनिक मैटर्स कुन केना दे रिलीजेस सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स या एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स ई फंगस कुन जैसे खोते ऑर्गेनिक मैटर बिका या डेड ऑर्गेनिक मैटर जायका को लेबा चैंपो खे डाइजेस्टिव एंजाइम रे या एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम रे ngata रिलीज chono environment nang tenete enzyme gunisi chono dead organic matters ma mangpo kya patena da proteins kya carbohydrates kya fatty acids kya ote un ngata simple form nang breakdown chono ha gole monomers na ta breakdown chono जैसे प्रोटीन जो ना अमीनो एसिड्स न कन्वर्ट chono carbohydrates जो ना ta के ना ग्लूकोज फ्रुक्टोज न कन्वर्ट chono ha gole fatty acids जो ना ta के ना small ngata lipid molecules ngata tena convert chono so each ngata breakdown chose na tenete small organic matters gun monomers ngata kena I fungus gun is absorb chono hagole so also se fungus sam shigyo na kaun ngata dead organic matters yo chauni ngata grow che te ngata saprotrophs ano जैसे ई ngata yotkan bokia na Amanita muscaria ngata mushroom enok fungus enok you can ngata karu loma chos ngata rulba chitong mangpo ngata bude thala auto ngata can grow chono then we have two types of saprotrophic fungi one is obligate saprophytes and otherwise facultative saprophytes sorry a parasite disiduk obligate saprophytes का होने नोक काउ सिर्फ ngata केना डेड ऑर्गेनिक मैटर का ग्रो चोनो ngata लिविंग जी का लिविंग प्लांट जी या लिविंग होस्ट या एनिमल जी का ता को ग्रो चोलदा ना मनो ला फिट चोंगे ना मनो we have mucor mucidos example then we have facultative saprophytes are those saprophytes which can feed on dead organic matter as well as they have a capacity to infect the living organism yani ko ngata dead organic matter sika ngata feed chongano as well as ngata living ngata host gunikang feed chongana no hagwale so to ngata facultative zano we have botrytis cinerea na ata Pastelocea je ngata fungus ngata facultative saprophytes no chira manole we have third group of fungi based on the nutrition that is mutualistic symbionts agole ab mutualistic symbionts ngata te fungus guneno te fungi guneno which form a partnership or a relationship with the other organism agole wherein the two organism the fungus and the other organism they are mutually benefited yani ngata fungus chikchigis ngata fungus ngata species chigis young ngata animal jigu whether it is a plant or ngata ya animal indo ya ngata young chitong shigindo hala tyon yam pota association form chono hagole tenete association bikana ko group bikana ngata khungis ka faida chano lichens ngata nge source do lichens hagole lichens are an association of fungus and algae iyok pengi diagram mis ta so ngata example no lichen si angeja thong su to ngata rocks ngunika hala ring unika ya rock surface unika different colors se ika ngata yellow color du gale different colors ngata kena lichens ngata grow chano hagole onna lichens ngata magnify chusel tana tene ngata fungal cells sa kya algal cells sa kya sorry ika ngistan te do lengeja ngata da se yellow color part pota fungal hyphae no nanku ngata green color part pota algae no algae are the plants so this is an association of plants and fungi tene ingiski kanata ko faida chishano fungus gunna ngata kenam da se algal cell gunis ko food prepare chon hola because they have got the chlorophyll pigment so fungi gunis algae kanata ko nutrients gunna no agole whether it is proteins and carbohydrates and chin na to nena no fungi ngata kena algae ngunna absorption of water and minerals tena ngata kena help chono ona chola second example of mutualistic symbionts is mycorrhiza
A mycorrhiza is an association of fungal hyphae and roots of plants, roots of the some of the plants and trees. So plants mang po tiang ata dakse ngata trees mang po tiak willow trees no yang ata dakse poplar ngune no yang ata temperate trees mang po tiakala kauni ngata roots pinka ngata fungus mang po grow chano hagwale. So otulong ata mycorrhiza chano ikana faida tenna chano ki trees kunis ngata kena fungi ya prepared food material bo provide chano fungus pus ngata trees gunna ya plants gunna water na mineral absorption cho chasen ngata help chono hagwale. So yu ngata kenang fungi se ngata ek method chain of nutrition ni. So we have three types of nutrition: parasitism, kanata biotrophism ya ngata biotrophic fungi na necrotrophic fungi ngata discuss chosano. Then we have saprotrophs, yeah, saprotrophic fungi. Then we have mutualistic symbionts hagwale. So this is all about nutrition in fungi. Nge rewa chun ngeja ha goes the do then please ha mangona ngeja teaches that's all. Thank you.